Good evening everyone and welcome back to our channel. I am Twinkle Quadra from IME Law College and currently a legal intern at Lexis and Company. And today the topic that I am going to start is offences against state. So in IPC there are 10 sections, that is from 121 to 130, and I will discuss half in this video and half in another video. So let's just get started. Section 121 says waging or attempting to wage war or abating wage of war against the government of India. So it means that if someone is waging a war means war को लाना, war को शुरू करना against the government of India. Whoever means it could be a Indian citizen or it could be a foreigner as well. So whoever will wage a war or who will attempt to wage a war, or there is a third condition, who will abate that war, so he will be liable for under section 121, and the punishment will be of death or imprisonment for life, or shall also be liable to fine. Now section 121A says conspiracy to commit offence punished by section 121. So in this, if you will do a conspiracy against the government of India, or you will do something that will conspire to over by means of criminal force or the show of criminal force, if you will do a conspiracy by showing criminal force to government of India, or you will do that criminal force to over the government. Overall means that government is गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में आ गई है जिसकी वजह से वो कंपेल हो गई है और उसको वो काम करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को जो वो नहीं करना चाहती, बिकॉज आपने उसको इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को वो कर दिया है, कंपेल कर दिया है, ओवर वो कर दिया है. तो अगर आप कॉन्स्पायर भी करते हैं वेज करने का या अबेट करते हैं या ट्राई टू कॉन्स्पायर, तो 122 के अंदर लाइबल होंगे आप, और शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Now 122 says collecting arms etc. with intention of waging war against the government. Now if someone, whoever, it could be an Indian citizen or foreigner, will collect or will intend to collect arms, men or ammunition, these are the things, and they will try to wage a war against the government of India, then the punishment will be of imprisonment for life, or imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years. Now 123 says concealing with intent to facilitate design to wage war. Now in this section it is said that if someone conceals the fact or conceals the design that will help in waging a war, it says whoever by any act or by any illegal omission, we all know that if there is a person and it's his legal duty to do that a particular act, but he resists to do that, that is illegal omission, that you are legally bound but you are not doing that act. So if you do that with the illegal omission or by any act and you conceal the design that will lead to wage a war, or with the intention to facilitate a wage a war, you conceal the design, then you will be liable for either description for a term which will be 10 years or shall also be liable for fine. So now let's come to 124. It says assaulting president, governor etc. with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power. So it means that if you will assault a president or a governor of any state, and by wrongfully restrain that person or by doing criminal force to that person, then you will be liable under section 124, and you will the punishment will be of 7 years and shall also be liable to fine. And it means the section means that you are restraining that person to exercise the power, or you are saying that do this exercise. या तो आप उसको restrain कर रहे हो पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, पर्टिकुलर एक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए, या तुम उसको कंपेल कर रहे हो, एक जो तुम अपनी चाहत है तुम्हारी कोई चीज़ कराना प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट से, उसको कंपेल कर रहे हो ये चीज़ करो, या तुम उसकी पावर को रोक रहे हो, या तो तुम अपनी चाहत उसको बता रहे हो कि ये चीज़ करो, तो 124 के अंदर लाइबल है. एंड नाउ 124A इज सेडिशन. सो सेडिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सेडिशन का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो देशद्रोही या राजद्रोही होता है. बेयर एक्ट की तरफ से बोलूँ तो हु एवर बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू hatred or contempt or excites or attempts to
excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished for 3 years, to which fine may be added or with fine. So it means that कोई भी अपने वर्ड से, वर्ड्स जो होते हैं वो स्पोकन हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, या तो अपने एक्शन से या फिर ऐसी चीज़ से जो क्लियरली दिख रही है कि हाँ ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को भड़का रहा है, उसको हम कहेंगे सिडिशन। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कह रखा है, येस लोग आंदोलन कर सकते हैं, अपनी आवाज़ रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर उस एक बंदे ने हज़ारों लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का दिया और वो लोग हिंसा की ओर आ गए, तो उसके ऊपर सिडिशन का चार्ज लग सकता है। और सिडिशन जो है उस पर बेल बिल्कुल नहीं मिलती है, जब तक कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ना दे दे तब तक कोई बेल नहीं मिलती है। सो दीज वर द सेक्शन एंड रेस्ट फ्रॉम 125 from 130 I will cover in my next video, and also keep liking, keep sharing and subscribe to our channel. Thank you for watching.